हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं मालकम और आज हम करेंगे राइट फ्रॉम डिक्टेशन की प्रैक्टिस। राइट फ्रॉम डिक्टेशन पीटी का सबसे इम्पॉर्टेंट टास्क है जो लिसनिंग और राइटिंग में 25 to 30 पॉइंट्स इजीली देता है दोनों मॉड्यूल्स में। सो मैं वीडियो में थोड़े सेंटेंसेस बोलूँगा और आपको कमेंट्स में टाइप करना है आंसर। आप पॉज करना वीडियो, फिर आपका आंसर टाइप करना और नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाना, ठीक है। ये सारे बहुत ही इंपॉर्टेंट सेंटेंसेस है, लेटेस्ट है फरवरी 2023 के और बहुत हाई चांसेस है कि आपके रियल एग्जाम में आ सकते हैं। सो लेट्स स्टार्ट। और हाँ, अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो फॉलो करना मत भूलना ताकि मैं ऐसा कंटेंट रोज पोस्ट करता रहूँ। लेट्स स्टार्ट नाउ। सेंटेंस नंबर 1, ऑप्शनल ट्यूटोरियल्स आर ऑफर्ड इन द फाइनल वीक ऑफ अ टर्म। सेंटेंस नंबर 2, the essay should be clear during the exam. Sentence number 3, the office opens on Monday and Thursday following the freshman seminar. Sentence number 4, students live in the residence hall during the term time. Sentence number 5, calcium's nutritional value enjoys growing popularity every year. Sentence number 6, over the years, more and more students are young. Sentence number 7, before choosing your university courses, you should consider your future career. Sentence number 8, all laboratory equipment will be provided in class. Sentence number 9, during the examination, electronic devices must be left to the supervisors. And finally, the last sentence for today, sentence number 10. Digital scanners can scan all kinds of materials provided that they are in small pieces. तो ये थे आज के टॉप 10 सेंटेंसेस फॉर राइट फ्रॉम डिक्टेशन। फटाफट आपके आंसर्स कमेंट में टाइप करिए और हाँ, फॉलो करना मत भूलना। मैं हूं मालकम, थैंक यू।